सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल न्यूज पे पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्जिये और तबसरे। इसके साथ हम आपके लिए लाएंगे दुनिया भर से वो तमाम मालूमात जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। नाज़रीन, आज का शो इस एतबार से मुनफरिद है कि आज हम बांग्लादेश के उरूज और ज़वाल के असबाब, उसकी मुआशी कामयाबियाँ और बहरान, सियासी नाकामियाँ और अकरा बरपरी जैसे यानी नेपोटिज्म समेत आइंदा इंतखाबात दीगर के अहम पहलुओं पर बात करेंगे, जिसके बाद हम शामिल करेंगे बांग्लादेश के माहिर मुईशियात डॉक्टर मुशफिक मुबारक से अहम मालूमात एक इंटरव्यू के जरिए। बांग्लादेश में सियासी मंजरनामा एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के मुल्क छोड़ने के बाद इनकी अवामी लीग की गैर मौजूदगी ने एक खला पैदा कर दी है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस खला को कौन पुर करेगा। बिल्कुल दुरुस्त का अरीबा आपने, क्योंकि मैं बताऊं नाज़रीन को कि शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफ़ा दिया, जब तलबा की क़यादत में होने वाले मुजाहिरों ने सरकारी मुलाजमतों के कोटे सिस्टम के खिलाफ एक बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार की, जिसके बाद अब एक अबूरी हुकूमत मुल्क चला रही है, जिसकी सरबराही नोबेल विनर यानी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इस हुकूमत में 2 तालिब इल्म रहनुमाओं को भी अहम ओहदे दिए गए हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक इन मुजाहिरों पर कार्रवाई के दौरान सैकड़ों अफराद हलाक हुए और हज़ारों जख्मी हुए। ये बांग्लादेश की हालिया तारीख में मुजाहिरीन पर सबसे खूनी कार्रवाई में से एक थी। अबूरी वजारत सेहत के बयान के मुताबिक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं और 400 से ज़्यादा तलबा अपनी बेनाई खो चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP इस सियासी खला को पुर करेगी, क्योंकि नाज़रीन गुज़िश्ता 3 अशरों से बांग्लादेश पर या तो शेख हसीना की अवामी लीग ने हुकूमत की है या उनकी हरीफ खालिदा ज़िया की BNP ने। BNP के तर्जुमान रूहुल कबीर रिजवी अहमद ने कहा है कि वो सियासी इस्लाहात और इंतखाबात के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए दीगर जमातों से बात करने को तैयार हैं। दूसरी तरफ BNP के इत्तेहादी जमात इस्लामी ने एक मुख्तलिफ रवैया अख्तियार किया है। जमात इस्लामी और उसके तुलबा विंग इस्लामी छात्र शब्बीरी पर शेख हसीना की हुकूमत ने दहशत गर्दी के खिलाफ क़वानीन के तहत पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अबूरी हुकूमत ने पिछले हफ्ते इस पाबंदी को हटा दिया है, ये कहते हुए कि उन्हें दहशत गर्दी की सरगर्मियों में इनके मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। नाज़रीन, जमात इस्लामी अब अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। मकामी अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इन इलाकों में इस्लामी जमातों को मुत्तहिद करना चाहती है जहाँ उन जमातों की मजबूत मौजूदगी है। जमात के मरकजी सेक्रेटरी मतियुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने एक इस्लामी इत्तेहाद बनाने पर बातचीत की है। दूसरी तरफ कोटा मुखालिफ तलबा तहरीक के रहनुमा हसनात अब्दुल्ला ने कहा है कि वो 2 तरफा सियासत से आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका कहना था कि बांग्लादेश को इस 2 जमाती सियासत से बाहर निकलना होगा, कि जो कि या तो अवामी लीग या तो BNP के इर्द गिर्द घूमती है। वो ख़ानदानी सियासत से भी बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंतखाबात कब होंगे। अबूरी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में कौम से खिताब में रियासती इस्लाहात के लिए कुछ रहनुमा असूल बयान किए, लेकिन उन्होंने इंतखाबात के लिए कोई वाज़ेह मंसूबा अभी तक पेश नहीं किया। उन्होंने सब्र की अपील की और कहा कि इंतखाबी रोड मैप का फैसला सियासी मुज़ाकरात के जरिए किया जाएगा। बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल बहुत पेचीदा है। सियासी बहरान के साथ साथ माशी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। नई हुकूमत को न सिर्फ मईशत को मुस्तहकम करना होगा, बल्कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात भी करवाने होंगे और ये यकीनी बनाना होगा कि हुकूमती पॉलिसी साजी मफाद परस्त ग्रोहों के कंट्रोल में ना आए। इसके साथ साथ मुल्क को कई दीगर मसाइल का सामना भी है, जैसे कि अपनी मसनूआत के आलमी मांग में कमी, अपने बड़े हमसाए और तजारती शराकत दार भारत के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात जो शेख हसीना को पनाह भी दे रहे हैं, और मौसमियाती तब्दीली की वजह से सैलाब ज़दा मुल्क में ज़्यादा शदीद
سمندری طوفانوں کا خطرہ ہے۔ بچوں کی مزدوری کے اسکینڈل، جان لیوا حادثات اور کووڈ-19 کی وجہ سے لاک ڈاؤن نے صنعت پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ قیمتوں میں اضافے نے مینوفیکچرنگ کو بہت مہنگا کر دیا ہے، لیکن مانگ میں کمی کی وجہ سے آپ اب زیادہ قیمت پر نہیں بیچ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ خاص طور پر بنگلہ دیش کے لیے برا تھا جو زیادہ تر درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ برآمدات سے منافع کم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر ملکی کرنسی کے ذخائر بھی کم ہو گئے۔ حسینہ واجد 1947 میں مشرقی بنگال میں ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کے والد شیخ مجیب الرحمان نے ان کی پرورش کی۔ وہ ایک سیاسی خاندان کی رکن تھی۔ ان کے والد کے قتل کے بعد حسینہ واجد جلا وطنی میں رہیں۔ 1981 میں بنگلہ دیش واپس آئیں اور عوامی لیگ کی قائد بنی۔ وہ پہلی بار 1996 میں اقتدار میں آئیں۔ انہوں نے بھارت کے ساتھ پانی کی تقسیم کا معاہدہ اور ملک کی جنوبی مشرق میں قبائلی علاقوں کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے لیے ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو اس مزید حوالے سے آگاہ کریں، لیکن اسی وقت ان کی حکومت پر متعدد مبینہ کرپٹ کاروباری سودوں اور بھارت کے سامنے بہت زیادہ سر جھکانے کی تنقید کی گئی۔ بعد میں 2001 میں اپنے سابقہ اتحادی سے دشمن بن چکی بیگم خالدہ ضیاء سے ہار گئیں، جو کہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی تھی۔ حسینہ بالآخر 2009 میں نگراں حکومت کے تحت ہونے والے انتخابات میں واپس اقتدار میں آئیں۔ حالیہ احتجاج اقتدار سنبھالنے کے بعد سے حسینہ کے لیے سب سے سنگین چیلنج تھا۔ یہ احتجاج ایک انتہائی متنازع انتخاب کے بعد ہوا اور جس میں ان کی پارٹی کو لگاتار چوتھی پارلیمانی مدت کے لیے دوبارہ منتخب کیا گیا۔ انتخابی مبصرین نے اس انتخاب کو جعلی قرار دیا اور مقامی میڈیا سے بھی اس دھاندلی کے بارے میں کافی زیادہ ذکر کیا۔ بالکل، اور ناظرین آپ کو اس حوالے سے مزید آگاہ کریں کہ بے چینی سرکاری ملازمتوں میں کوٹا ختم کرنے کے مطالبے سے شروع ہوئی، لیکن جب انہوں نے پولیس کا استعمال کر کے مظاہرین پر تشدد کیا جس میں 200 سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور بہت سے زخمی ہوئے، تو یہ ایک وسیع تر حکومت مخالف تحریک میں بدل گئی۔ ان کی تحریک سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا اور ان پر پہلے بھی اپنے سیاسی مخالفین، تنقید کرنے والوں اور میڈیا کے خلاف ظالمانہ آمرانہ اقدامات کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے لیڈر کے لیے ایک حیرت انگیز تبدیلی تھی جس نے کبھی کثیر جماعتی جمہوریت کے لیے لڑائی لڑی تھی۔ انسانی حقوق کے گروپس کا تخمینہ ہے کہ 2009 میں حسینہ کے دوبارہ اقتدار سنبھالنے کے بعد سے کم از کم 600 جبری غائب ہونے کے واقعات ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں افراد غیر قانونی قتل کا نشانہ بھی بنے۔ بنگلہ دیش کی سیکیورٹی فورسز پر بھی سنگین بدسلوکی اور تشدد کا الزام لگایا گیا۔ کنسیڈرنگ کہ اتنے سارے واقعات کے بعد اب فائنلی 1 مہینہ ہو چکا ہے کہ بنگلہ دیش میں سے حسینہ واجد اپنا ریزگنیشن دے چکی ہیں اور بنگلہ دیش ایک نئے چیپٹر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بالکل، اب یہ تو ہوا بنگلہ دیش کا ماضی اور حال۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا۔ بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو اب ہم بنگلہ دیش کے جو مستقبل ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک انتہائی دلچسپ مہمان سے۔ یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی رہیے، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ اب ہم بڑھتے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف۔ ہم بات کریں گے ڈاکٹر احمد مشفیق مبارک سے بنگلہ دیش کے بارے میں اور ان کی سیاست کے بارے میں اور جو بھی اکنامک چیلنجز اس وقت بنگلہ دیش فیس کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ Thank you so much, Dr. Mubarak, for joining us. Professor Mubarak, the first question that I posed to you this morning is that I interviewed you a few years back and I asked you that what role did microfinance, especially Grameen Bank, played in Bangladesh's development, and you said that the role was overplayed. Now that Dr. Yunus is the Prime Minister of the country and he was actually the one who actually set up Grameen Bank, and you said that the popularity Grameen Bank got was also due to the Nobel Peace Prize. The first question that comes to my mind is that what other factors are the reason that actually contribute to Dr. Muhammad Yunus's popularity in the country? Okay.
Yeah, so as you all know, we just went through a revolution that has been termed the monsoon revolution in Bangladesh. And it was a student-led revolution. They are the ones who took to the streets. The students gave their blood, and it was reminiscent of our 1952 language revolution, which had to do with when Muhammad Ali Jinnah had wanted to declare Urdu as the national language of all of Pakistan, and the Dhaka University students revolted against that. So it was very similar, except that this time, many, there were a handful of students who were killed by gunshots back in 1952. But this time, a few hundred students had to give their lives in order to get the previous regime, the dictatorial, autocratic regime out. And as soon as they were able to get them out, of course, the army then had to make a quick decision on whom to invite to put together a government, an interim government. And what we saw on the very first day is that they went back to what they're normally used to, which is the political parties. So they invited the political parties into a meeting, and the students were getting sidelined, even though it was really the student power and the student organization that brought us this revolution. And so the students made a very smart move immediately. They went on Facebook. This was a declaration they made on Facebook. That they would like Dr. Yunus to lead the new interim government and act as chief advisor. Chief advisor and the interim government is the language we use for sort of an interim prime minister of sorts. So that's how Dr. Yunus came in. Excellent. तो नाजरीन, डॉक्टर मुशफिक मुबारक बताते हैं कि जब काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी इस पूरी रेवोल्यूशन में जो कि बांग्लादेश में अभी रिसेंटली आई, और उन्होंने बजाय सियासी जमातों के पास जाने के उन्होंने ये फैसला किया कि वो डॉक्टर यूनुस जैसे एक मोतबर शख्स के पास जाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स हैं जो पूरे बांग्लादेश में वेल रिस्पेक्टेड हैं. तो अगर वो उनको लेके आते हैं, वो बांग्लादेश के चैलेंजेस को ज़्यादा बेहतर अंदाज में भी समझते हैं. तो इस वजह से उनका कहना था कि मुशफिक के डॉक्टर यूनुस एक इंतहाई अच्छे सरबराह मुमलिकत रहेंगे बांग्लादेश को इन चैलेंजेस से आगे लेके जाने के लिए. Bilkul. This brings me to my next question, Dr. Mubarak. I wanted to ask you about, so just to give some context for our audience, it is very clear that the recent development and progress in the Bangladeshi economy has largely piggybacked on the export industry. And considering the fact that a lot of unpaid labor, especially women, underpaid, unpaid, oversupplied labor, especially women, were playing a huge role in the economy's progress. But now we are looking at maybe 60 or more factories shutting down in Bangladesh. So considering all of this and the political unrest and the fact that foreign investment is obviously going to slow down a lot as well, do you think this is going to have a serious or irreversible impact on the export industry, because they were really responsible for a lot of growth in Bangladesh? Yeah. No, I don't think it's very clear whether or not this will have an irreversible impact. It is true that we're going through challenges. Democracy, freedom doesn't come easy, it doesn't come cheap. While the country was growing and business was happy with the situation as it was, right, there were huge costs being imposed on our citizens as well. The biggest cost is that there was an autocrat in power who was silencing people, right? And the thing is that innovation cannot happen in a country when people are silenced. First of all, we needed to win our freedom, and that was the most important achievement today. And second, we now know that a lot of corruption took place under this autocratic regime. Their cronies literally stole possibly billions of dollars, but if not, definitely hundreds of millions of dollars for the country, right? And so that has also led to a worsening of our debt position, just because, the cost of construction ended up being some of the highest in the world because of this corruption. So now that this autocrat is ousted, we are hopeful that, in fact, the economy will also rebound in the right direction, just because we're going to be able to get rid of a lot of the waste and corruption and theft that was happening in the country over the last decade. That's actually a very astute statement, Dr. Mubarak. Just to translate, नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि डॉक्टर मुशफिक मुबारक से हमने पूछा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बांग्लादेश की काफ़ी सीरियसली डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबल थी, वो इंडस्ट्री का क्या होगा कंसिडरिंग कि इतने ज़्यादा पॉलिटिकल बैकलैश है और इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है. तो डॉक्टर मुबारक ने हमें 3 बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं. सबसे पहले वो बात करते हैं कि फ्रीडम जो है, या किसी भी समाज में आज़ादी राय, आज़ादी
حقوق کی آزادی بہت ضروری ہے. تو اسی لیے کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اب آٹوکریٹک گورنمنٹ نہیں رہی ہے بنگلہ دیش میں, تو آٹومیٹکلی جو اکانومی کے حوالے سے بھی چیزیں بہترین ہوتی جائیں گی. انہوں نے دوسری اہم بات کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے ایک ایسا معاشرہ تھا بنگلہ دیش میں جہاں پہ سائلنس کیا جاتا تھا لوگوں کو اور کسی بھی قسم کے ڈسینٹ کو سپریس کیا جاتا تھا. اب جو کہ ایسا معاشرہ نہیں رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے انوویشن اور اکانومی اور پروگریس کی ساری چیزیں آگے جاتی رہیں گی. اور لاسٹ جو چیز ہمیں ڈاکٹر مبارک نے ابھی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ بنگلہ دیش کی حکومت جب حسینہ واجد کے انڈر تھی تو بہت زیادہ کرپشن تھی. انہوں نے کہا کہ پاسبلی بلینز آف ڈالرز کی کرپشن ہوتی تھی, اور جب اتنے لارج اسکیل پہ تھیفٹ اور کرپشن ہو رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس معاشرے میں اکانومی میں انوویشن تو نہیں آ سکتی. ایک سوال اور میں ڈاکٹر مبارک سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر مبارک, I wanted to ask you that in the last 1.5 decades when Sheikh Hasina was the Prime Minister, there were several occasions where the opposition parties actually tried to depose her via protests and they actually got violent. What was very different this time that led to the removal of Sheikh Hasina? Was it just that maybe too many people lost their lives, or what actually happened that led to this debacle of Sheikh Hasina's government, which she considered as the most powerful regime in the history of the country? It's an excellent question, because the most remarkable thing that happened within the last month is that for 15 years, as you said, opposition parties with all of their physical power and might on the streets, they weren't able to do anything to the party that was in power, right? But these students, without taking up any arms whatsoever, right, they were able to depose this autocrat who had been a powerful autocrat in power for 15 years, right? Now, that's going to be a long and complicated conversation why this happened, because I think history books will need to be written about this, because it is a remarkable achievement. Yeah. Hopefully some political science dissertations will be written about this, right? But I'll just say that, what seems to really matter is that you need some kind of a focal point that brings people together. You probably heard that the focal point in this case was a quota protest, the fact that the public civil service jobs were being allocated to the descendants of the freedom fighters in our 1971 War of Independence. بالکل ناظرین, پروفیسر مبارک نے اس سوال کا بڑا مفصل جواب دیا. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ 15 سال کا جو شیخ حسینہ کا دور اقتدار تھا اس میں کئی دفعہ اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کوشش کی گئی کہ شیخ حسینہ کو اقتدار سے نکالا جائے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو اس اسٹوڈنٹس کی جو موومنٹ تھی اس میں ایسا کیا تھا کہ شیخ حسینہ جو کہ اپنے آپ کو انتہائی طاقتور لیڈر سمجھتی تھی, ان کو اقتدار سے جانا پڑا؟ تو اس میں ڈاکٹر مبارک نے اس کا جواب دیا کہ ایون دو پچھلے 15 سالوں میں بی این پی, جو کہ خالدہ ریاست کی جو پارٹی تھی, خالدہ ضیاء کی جو پارٹی تھی, معاف کیے گا, انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی, لیکن سٹوڈنٹس نے جو بغیر کسی اسلحے کے, بغیر کسی وائلنس کے, وہ بیسکلی ایک ایسے پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے. ایشوز تو سب کے تھے, لیکن وہ ایک پوائنٹ جو تھا وہ بیسکلی جو کوٹا سسٹم تھا, جو کہ 1971 کے جب جنگ کے بعد جو شیخ حسینہ نے مختص کیا تھا اس وقت کے فائٹرز کے لیے, انہوں نے اس کے خلاف جد و جہد کی, کیونکہ وہ بیسکلی اس سے بنگلہ دیش پہ نیپوٹزم اور کرپشن کی ایک بڑی ایک چل چکی تھی. اس کو بیسکلی اس نے کافی زیادہ ملک کو ڈیمیج کیا ان ٹرمز آف کمپیٹنٹ پیپل. تو ڈاکٹر مشفق مبارک نے کہا ہے کہ اس پہ واقعی میں ایک بالکل تاریخ دان اس پہ ریسرچ کریں گے کہ وہ کیا ہوا, لیکن ایک مین آنسر اس کا یہ تھا. بالکل. Dr. Mubarak, this is going to be our last question for today, and thank you so much again for joining us. I wanted to ask you, what are the 3 main economic challenges that you think the interim government is faced with today, and how would you have dealt with it if you were in the interim government? Yeah, one big challenge is this stolen asset recovery. Right? As I mentioned, due to corruption, nepotism, hundreds of millions of dollars have been stolen from our country, right? We need to figure out ways to get it back. Some of the people who stole are now behind bars, right? But we need to make deals with them in order to figure out where the money is, what country they've stored it in, and use our international connections to try to bring the money back. And hopefully Dr. Yunus's international connections and the fact that he is well regarded around the world will be helpful for that. That's number one.
And number two, for any kind of investment, whether domestic or foreign, right, to get businesses started, we need to establish law and order and reduce uncertainty, right? I think right now there's still a lot of uncertainty, political uncertainty. How long will this interim government stay in power? And without answers to those questions, I think people are going to be understandably reticent, uncomfortable to make large-scale investments in the country. So we need to resolve the uncertainty quickly, right? And third is that we need to also similarly make people understand, the world understand, that we are open back up for business. So if H&M or Walmart is sending orders for ready-made garments, right? They need to feel comfortable that the orders will be delivered on time. Otherwise, we might lose that business to other competing countries like Vietnam or Cambodia, right? And if that happens, then that would have a longer-term effect on our economy. नाज़रीन, डॉक्टर मुशफिक मुबारक का कहना था कि जो 3 मेजर चीज़ें हैं या इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जो इस वक्त बांग्लादेश की रियासत फेस कर रही है और किस तरह से वो उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, उसमें नंबर 1 पे है स्टोलन एसेट रिकवरी, जिसका मतलब कि जो भी ऐसे असासे जो बेसिकली बांग्लादेश में जो पिछले 15 साल में जो करप्शन और नेपोटिज्म की नई रिकॉर्ड्स तोड़े गए, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो करप्शन का पैसा है वो बैरूने मुल्क मुंतकिल हो गया। तो उन्होंने इस जानिब इशारा किया कि उसको वापस लाना पड़ेगा ताकि बांग्लादेश के जो शहरी हैं उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो अपने इकोनॉमिक सिस्टम में। और उसके लिए उन्होंने काफ़ी लोगों को एहतजाब के हवाले से अरेस्ट भी किया है, लेकिन उनसे बात करनी पड़ेगी ताकि हम जो है ताकि बांग्लादेश का जो है कॉन्फिडेंस दोबारा रिस्टोर हो सके। मुबारक का मजीद ये भी कहना था कि इन्वेस्टमेंट दोनों डोमेस्टिक और फॉरेन को बहाल करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे काबू पाना पड़ेगा। और लास्ट उनका ये मौक़िफ़ था कि लोगों को ये एतमाद दिलाना होगा दुनिया भर में कि बांग्लादेश इज़ ओपन फॉर बिजनेस। तो डॉक्टर मुशफिक मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, आपने हमें आज के शो पर ज्वाइन किया और हमें अपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसाइटफुल एनालिसिस से आगाह किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हैव हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। डॉक्टर मुशफिक मुबारक ने हमारे साथ डिस्कशन की है जो हमारे खित्ते के लिए, हर मुल्क के लिए ज़रूरी है। उन्होंने बात की कि डिसेंट को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्होंने बात की कि आज़ादी राय होनी चाहिए, उन्होंने बात की कि एक ऐसा मुआशरा होना चाहिए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सेफ हो ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके। साउथ एशिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाजरीन यही आता है कि वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, और अगर इन मशवरों पे हम चलें तो हमारा जो खित्ता है तकरीबन 2 अरब लोगों का खित्ता है, वो बिल्कुल दुनिया को पिछाड़ सकता है। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी दोबारा कल इंशाअल्लाह। और बोल न्यूज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड करिएगा। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।